हेलो एवरीवन। अगर तुम रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो ये वाला, तो मेरे चैनल पे जाके न्यू लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हो। और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक। चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अगर लाइव नहीं भी ज्वाइन करना है तो ये वीडियो देख लो थोड़ा सा। आज मटेरियल साइंस कंप्लीट करना है, सब्जेक्ट ख़त्म करते हैं। थोड़ा कैमरा पीछे लेते और थोड़ा राइट में, है ना। चेक करेंगे कैसा दिख रहा है तो ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, लास्ट लेक्चर बचे। लोड ही नहीं हो रहा। हाँ, अभी हो गया। Atmosphere ancestor flexibility they possess of followings that they are finding applications extensively in electronic applications, optics applications, and in aerospace industries. In aerospace applications for as solid lubricants both बताया गया है. Now let us see nitrites are that using these inorganic superior properties compared to films, two-dimensional, or they can manufacture into three-dimensional final products. Now, an important statement यहाँ पर लिखिएगा, that is, these nanomaterials have exceptionally good properties. Let me write here. That is, nanomaterials have superior properties. Nanomaterials have superior properties. Nanomaterials have superior properties due to two important reasons. Nanomaterials have superior properties compared to traditional materials like alloys, composites. Compare करने से nanomaterials will have superior properties because of two specific reasons. Due to, I'm writing the reason here. That is, number one, high surface area to volume ratio. High surface area to volume ratio. High surface area to volume ratio. This makes the materials which are having high surface area to volume ratio will become highly surface active. Therefore, they become suitable for use in the form of catalysts to increase the speed of chemical transformations. And the second important reason is that they have high quantum efficiency. They have high quantum efficiency. Nanomaterials have high quantum efficiency. When I say high quantum efficiency, this quantum efficiency of a material indicates light absorption capacity. So when the nanomaterials are having high quantum efficiency, they can absorb ultraviolet radiation and reflect it back. That is the reason why today even sunscreen lotions are being made out of nanomaterials. Similarly, nanomaterials will have high magnetic coercivity. Very high magnetic coercivity. Due to high magnetic coercivity, memory loops of supercomputers are produced by nanomaterials. Nanomaterials will have very high hardness and wear resistance. Nanomaterials have excellent biocompatibility. Nanomaterials can be produced with extremely lightweight. Right? So wherever you want materials in wear resistance applications, like tooling applications, cutting tool applications, you can make use of nanomaterials. Because they have high hardness, high wear resistance. Because they are having lightweight and they are having excellent biocompatibility, nanomaterials are being used in medical applications, like artificial heart valves, dental implants, right? And orthopedic joints, they are all today made out of nanomaterials. They are having highly energy efficient water filtration capability. That is the reason why nanomaterials are being used in reverse osmosis systems. Friends, if these nanometric powders, like for example nanometric iron oxide powder, is added to the groundwater, normally what happens is groundwater will be containing highly polluted materials. They are called as
the chlorinated hydrocarbons. We know these pollutants in the groundwater, they can result in cancerous diseases. That's why they are called as carcinogens. If you take nanometric iron oxide powder and mix it with the groundwater, you know what's going to happen? This nanometric iron oxide powder chemically reacts with the chlorinated hydrocarbons and converts them into less harmful products. That means you can avoid the cancer disease to many people. Friends, these days we are coming across what are called as enhanced textiles. When I say enhanced textiles, I mean breathable fabrics. From those fabrics, the circulation of air will be going on very comfortably. Breathable fabrics. Number 2, stain-resistant fabrics. Number 3, waterproof fabrics. Stain-resistant, waterproof fabrics and breathable fabric. That's why they are powders, like for resistance. In high to increase the speed of chemical transfer area to volume. Ratio, high surface area to volume ratio. This makes the materials which are having surface area to volume ratio will become highly surface active. Therefore, they become suitable for use in the form of catalyst to increase the speed of chemical transformations. And the second important reason is that they have high quantum efficiency. They have high quantum efficiency. Nanomaterials have high quantum efficiency. When I say high quantum efficiency, this quantum efficiency of a material indicates light absorption capacity. So when the nanomaterials are having high quantum efficiency, they can absorb ultraviolet radiation and reflect it back. That is the reason why today even sunscreen lotions are being made out of nanomaterials. Similarly, nanomaterials will have high magnetic coercivity. Very high magnetic coercivity रह सकता है. Due to high magnetic coercivity, loops of supercomputers are produced by nanomaterials. Similarly, nanomaterials will have high magnetic coercivity. Very high magnetic coercivity रह सकता है. Due to high magnetic coercivity, memory loops of supercomputers are produced. Nanomaterials. Nanomaterials will have very high hardness and wear resistance. Nanomaterials have
excellent biocompatibility. Nanomaterials can be produced with extremely lightweight. Extremely lightweight. Lightweight. Yeah, buddy. Right? So wherever you want materials in real resistance applications, like tooling applications, cutting tool applications, you can make use of nanomaterials. Because they have high hardness, high wear resistance. Because they are having lightweight and they are having excellent biocompatibility, nanomaterials are being used in medical applications like artificial heart valves, dental implants, right, and orthopedic. Biocompatibility, nanomaterials are being used in medical applications like artificial heart valves, dental implants. Right? And orthopedic joints, they are all today of nanomaterials. They are having highly energy efficient water filtration capability. That is the reason why nanomaterials are being used in reverse osmosis systems. Friends, if these nanometric powders, like for example, nanometric iron oxide powder, is added to the groundwater, normally what happens is groundwater will be containing highly polluted materials. They are called as the chlorinated hydrocarbons. We know these pollutants in the groundwater, they can result in cancerous diseases. That's it. The chlorinated hydrocarbons. We know. These pollutants in the groundwater, they can result in cancerous diseases. That's why they are called as carcinogens. If you take nanometric iron oxide powder and mix with the groundwater, you know what is going to happen?
this nanometric iron oxide powder chemically reacts with the chlorinated hydrocarbon. And converts them into less harmful products. That means can avoid the cancer disease to many people. Friends, these we are coming across what are called as enhanced textiles. When I say enhanced textiles, I mean breathable fabrics. From those fabrics, the circulation of air will be going on very comfortably. Breathable fabrics. Number 2, stain-resistant fabrics. Number 3, waterproof fabrics. Stain resistant, waterproof fabrics and breathable fabrics. All these 3 varieties of fabrics are called as enhanced textiles. Today they are being produced out of nanomaterials. Today we are talking about crash resistance in automobiles, bumpers, springs, etc. They are all supposed to satisfy high performance indices. So in order to have excellent crash resistance, bumpers are being made out of nanometric clay. Today they are being produced out of nanomaterials. Today we are talking nanometric. So from those fabrics, the circulation of air will be going on. Bricks will the cancer disease to many people. Friends, these days we are coming across what are called as enhanced textiles. When I say enhanced textiles, I mean breathable fabrics. From those fabrics, the circulation of air will be going on very comfortably. Breathable fabrics. Number 2, stain-resistant fabrics. Number 3, waterproof fabrics. Stain-resistant, waterproof fabrics and breathable fabrics. All these 3 varieties of fabrics are called as enhanced textiles. Today they are being produced out of nanomaterials. Today we are talking about crash resistant. Automobiles, bumpers, springs, etc. They are all supposed to satisfy high performance indices. हेलो गाइस, चैनल पे अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना. So in order to have excellent crash resistance, bumpers are being made out of nanometric clay. Most of the automobile industry is using nanometric material. For example, bumpers are being made out of nanometric clay. Most of the automobile industry is using nanometric materials today. For example, nanometric material coating that is made on the windshields, the glasses of cars, costly cars, do not allow water droplet to stick to the particular glass. Because normally what happens is you leave your in the rain, right? The water that flows on the glass shield, it will make some markings on that. Dust chippakta rehta hai, and next day when the rain clears, you should go on completely, clean your car. But with the nanomaterial coating made on the glass shields, the glasses are becoming water repellent. Water repellent glasses with nanomaterial coating. The rain droplets which fall on the glass shield,
they experience lubricating effect at roll out. वो चिपक के नहीं रहता है ग्लास शीट के ऊपर. Water repellent glasses, automobile components, cutting tools, reverse osmosis systems, बेटा. Memory loops of supercomputers, cutting tools, right? Similarly, medical applications, वैसा ही बेटा. सुना होगा आपने? Yttrium, samarium, cobalt magnets बोल के. They are used to create powerful magnetic fields that are used in MRI instruments, MRI scanning instruments बोल के सुना होगा. All such materials are becoming possible. दोस्तों, let me give you one more wonderful information. That is, जो समाचार हमारे को मालूम है ceramics के बारे में, everyone knows that ceramics are noted for their brittleness. They are not ductile materials, they are brittle materials बोल के लोग बोलते रहते हैं. But do you know, in the nanometric form, if you make ceramic materials, they will exhibit superplastic deformation. Superplastic deformation means they can exhibit to 500% elongation. Mild steel exhibits to 24% of elongation before fracture. If ceramic materials are made in nanometric form, they exhibit it means superplastic deformation. Superplastic deformation means they can exhibit to 500% elongation. Mild steel exhibit percentage of elongation before fracture. If ceramic materials are made in nanometric form, they exhibit superplastic deformation, means they can exhibit 500% of elongation. That means more ductile than even mild steel. That means brittle materials will become very ductile. Soft materials can be converted into hard materials. Easily bearing materials can be converted into wear resistant materials. Non-magnetic materials can be converted into highly magnetic materials. Medical applications, automobile applications, chemical plant applications. These are generally applications of nanomaterials. Let us try to write them as you are record. All right? So come on, friends. Applications of nanomaterials के ऊपर ध्यान रखेंगे. Applications of nanomaterials. हेलो भाई, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना. Applications. Applications of nanomaterials. Applications of nanomaterials. Please make this two-column table. The first column is nanomaterial, and second column heading application. Application. Right. So with this two-column table, I am presenting whatever I have discussed so far. Let me write here. Nanocrystalline. Number one. Nanocrystalline tungsten carbide. Nanocrystalline tungsten carbide. Nanocrystalline tungsten carbide is used for cutting tool application. It is used for cutting tools application. Similarly, in the second position, I will write nanometric ceramics. Nanometric ceramics exhibit superplastic deformation, exhibit high ductility, and superplastic deformation. Superplastic deformation. Next, the third, carbon nanoparticles.
भाई 3 जन जो भी देख रहे हैं लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं इधर पढ़ाई करता अभी वो तो मैं Carbon nanoparticles. They are used as reinforcement. Used as reinforcement. They are used as reinforcement in car tires. Next, composites. Composites containing plastics and nano-sized particles or nanoparticles of clay. They are being employed in car bumpers. Application is in car bumpers. Next, we write here number 5. We can write nano coating of titanium dioxide. Nano coating of titanium dioxide
It is used for self-cleaning windows. Application is self-cleaning windows in cars. It means water repellent glasses. Water repellent glasses. These are the ones which are being used in costly cars, imported cars. Next. Let me give you the application number 6. Let me give you used in these are self-clean nano composites containing plastic and nanoparticles of clay. Composites containing plastics and nanoparticles of clay. Car bumpers. coating of titanium dioxide. It is used for self-cleaning windows. Application is self-cleaning windows in cars. It means water repellent glasses. Water repellent glasses. These are the ones which are being used in costly cars, imported cars. Next. Let me give you the application number 6. Nanocrystalline yttrium, samarium, cobalt magnets. These are used in memory loops of supercomputers. They are used in memory loops of supercomputers. They are used in memory loops of supercomputers. So let me take you further. Nanocrystalline Nano-engineered yttrium. membranes. Nano-engineered membranes. They are used as energy efficient water filtration systems. They are used as energy efficient water filtration systems. They are used as energy efficient water filtration systems in reverse osmosis systems. Reverse osmosis systems. Every house is having RO systems. In the RO systems called as reverse osmosis systems, in the years to come, we are all going to have this nano-engineered membranes. And we write here, porosity controlled polymers
and inorganics, porosity controlled polymers and inorganics. They are used in enhanced textiles. They are used in enhanced textiles. Yeah. Used in enhanced textiles. Porosity controlled polymer. Next, number 9. Nano-sized titanium dioxide. Nano-sized titanium dioxide and zinc oxide. They are used in sunscreen lotions. They are used in manufacturing of sunscreen lotions for skin protection. Next, we write here nanocrystalline zirconium oxide. Nanocrystalline zirconium oxide. Let us write in brackets. It is light in weight. It is light in weight, comma, nanocrystalline zirconium oxide is light in weight, comma, hard, comma, wear resistant, and biocompatible. Hence, it is used in medical implants. Right? Similarly, we can always say Nano-sized titanium oxide. And zinc oxide. Sunscreen lotions. Nanocrystalline zirconium oxide. the nano-sized iron oxide. We'll take one example here. Nano-sized iron oxide. Nano-sized iron oxide. It is used as pigment in lipsticks. It is used as pigment in lipsticks. Right? Those are the generalized applications. Those are the generalized applications for the so-called nanomaterials. Right? Now, in our discussion related to nanomaterials, friends, we have gone about what are the types of nanomaterials, how to define a nanomaterial, what are the internal composition of inorganic particles, what will be the structure of the fullerenes, how they are transformed into carbon nanotubes and nanospheres, and where they are going to use, what are their generalized properties. Then we try to examine what are the various technical applications of nanomaterials. With that, the basics of nanomaterials topic is concluded. Now, once that is done, we are now going for presenting the answers for workbook questions. So let us see here. There are very few questions here, and
and they are not very much prescribed. So what I had to do is, what I had to do in the class is, my requirement was that if I took it up in the class, I should have given you the information like this. For example, I told you earlier, steels are classified on different bases. Different types of steels are available. Plain carbon steels, alloy steels. So मैंने क्या किया? I thought I would save this time by way of incorporating this information in the theory book. Therefore मैंने क्या किया बेटा? तो मैं include कर दिया at gmail.com. All are lowercase letters. All are lowercase letters. There are no gaps. There are no underscores. No upper score. But all are lowercase letters. No underscores. No upper scores. Nothing. Material science made easy at gmail.com. Please keep in touch. मैं आपका सेवा करने के लिए हर समय में तैयार बनकर रहता हूँ. But I am feeling really handicapped that I could not see you all. I could not meet you all. Because when we meet in physical presence, what happens is we would have snatched some time somewhere and try to help you in person. I understand most of you are in the regular college, work. That is probably one reason why you have opted for online. Right? All right. हम लोग तैयार हैं बेटा आपका सेवा करने के लिए. No doubt, in online education system, you will have to run with the teacher because finally it's the data that is important for everyone. So I had to talk and write. You have to listen and write. In the process, if you have missed any information from being noted in the classroom, in the notes, better please play these videos of the recorded lectures and slowly इसको run करके because you have an option to control the speed of the video. बीच में pass भी कर सकते हैं. करते करते notes लिखो करो. Make a beautiful notes. And once the notes is ready, once you have solved the workbook, then feel confident of the area. Again, I am telling you, be a good participant of various online test series. Online test में participate करना है. Number 2, last 30 years of GATE papers and ESC papers को solve करो बेटा. That raises your confidence and time management skill like anything. So important. And in the process of establishing your careers, if you feel that we will be in a position to help you out, बेटा, don't hesitate. हम हैं आपका सर्विस में, आपका सेवा में. We love to see you coming up in life. God bless you. All the best. मैं अब इंतजार करता हूँ तुम्हारा doubts clarify करने के लिए. All right, दोस्तों, please. Now that it is 9:45 in my watch, as usual, मैं 10 PM तक वेट करता हूँ बेटा. अगर किसी के पास डाउट है आप पूछ सकते हैं. और दूसरा, कल से दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है machine tools. Probably Kunjan sir is coming up from tomorrow. We'll have colorful slides, wonderful handwriting, beautiful diagrams, all that. He's a great teacher, great asset to our organization. You will have wonderful enjoyment of the subject area with machine tools. Right? So please attend lecture from 6 PM to 10 PM. God bless you. Do very well. आपके पास डाउट्स है तो पूछ सकते हैं. भाई एक सब्जेक्ट ख़त्म हो गया, क्या सुकून मिल रहा है. अभी इसका एक्स्ट्रा पार्ट भी करना पड़ेगा. Where the hell is this? Material science, GS extra, EAC. GS को भी एक्स्ट्रा है. जाने जाना तुझे दीवाना सपनों में कौन सा है मैंने लिखा है यहाँ पे. GS एक्स्ट्रा कहूँगा. जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना
जाना ढूंढे तुझे दीवाना रोज आए जिंदगी में आना सनम चले जाना ढूंढे तुझे दीवाना रोज आए अभी अपन क्या करते, टेक्निकल का हो गया, मटेरियल साइंस, अभी जीएस का भी कंप्लीट कर लेते साथ में, लिंक बनी रहेंगी। वन से 8 तक है ना, और उधर कितने हैं, इधर 4 है, 8 8 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये कौन सा है अपना, 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 E1 E2 E3 E4। अबे यार इतने लेक्चर और देखने के हैं, 24 आवर प्लस 9 आवर्स, 24 प्लस 9 33 आवर्स। भाई 33 आवर्स के और लेक्चर बचे हैं मेरे देखने के, बाप रे। अरे हेलो, ये हो गया अपना कंप्लीट।
अभी इसको मिटा देते। शायद अपने सब्सक्राइबर का नंबर भी बढ़ गया है तो उसको भी चेंज कर लेते हैं। टू 267 हो गया है। भाई 267 हो गया। चलो अगर मैं जीएस के लिए दूसरी बुक बनाऊँ कि इसमें लिख दूँ? इसमें लिख डालता। मटेरियल साइंस जीएस। चलो भाई। Good evening, namaskar. Some of you have written good morning, so good morning to all of those who has written good morning. Those who are writing good evening, for them good evening. Jai Shri Krishna, Anuj, right? Jai Shri Krishna. Sorry for the delay. Class was announced from 5:30. I could not take the class at 5:30. The reason behind is I'm having high fever, so I went to doctor for the checkup. And if reports would be normal, then class will remain continue. If it is only viral, then it will remain continue. But as of now, it seems symptomatically, it seems that it may be dengue. And I don't know actually. The reports will come tomorrow. That they will tell whether it is dengue or it is normal fever. So if it is normal fever, then I will take class. Class will remain continue from 5:30 to 9:30 or 10, whatever time will have been announced to you. The class will remain on the same way. But if it is dengue, then obviously you know that in dengue I have to be admitted. So let's hope everything is good. उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक होगा, कुछ खराब नहीं होगा। बैच आपका स्टार्ट करना भी जरूरी था, क्योंकि शायद बहुत दिनों से पेंडिंग था और मैं तमाम सारी सब्जेक्ट्स पढ़ाने के चक्कर में इधर उधर वेरियस सेंटर्स पे था। आई वॉज नॉट इन दिल्ली सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 2 मंथ। सो द रीज़न बिहाइंड दिस स्टार्टिंग क्लास की इतने दिनों से बंद है, तो मैं समझ सकता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि इसको पूरा किया जाए, शुरू किया जाए। शायद इसी वजह से बेस्ट हेल्थ पेज में ना होने के बावजूद भी शुरू किया जा रहा है।
So let's begin today's class. आज की क्लास बहुत लंबी नहीं जाएगी और जैसा आप जान चुके हैं, इनफैक्ट अभी मैं मैनेजमेंट से डिस्कस भी कर रहा था कि कैन बी कैंसिल द क्लास. देन दे सेड दैट सर स्टूडेंट्स आर वेटिंग सिंस last 1.5 hours. So just go and talk to them. Just give them at least a brief introduction why you could not come. So I will be discussing few things with you and we'll start the subject, but not in the stage to continue till 10 o'clock. That's not practically possible because having a very severe body pain and fever. This time, fevers, how they react upon the body, and in that case, teaching is something emotional game. So until you are not best in phase of body and brain, then it is not practically possible to teach in the best possible manner. And let's still continue. Let's begin. The subject which we are going to study that may have been informed to you, which is basics of material science. Basics of material science. Material science. This is the part of the syllabus of general studies, paper 1, GS paper 1. It is part of the syllabus of GS paper 1. GS paper 1. और ये बैच हिंदी या इंग्लिश, आई हैव नॉट बीन टोल्ड कि whether it is हिंदी or it is इंग्लिश. So किस भाषा में मुझे कंटिन्यू करना है मैं पूछना भूल गया. Thank you Arpit, thank you everyone, Sanjay, Amrita, Sakshi, Situ, Ranjan, good evening everyone. Thank you. So can anyone tell me in which language I have to? English or Hindi? So it is the part of the syllabus of basics of material science, that is the paper 1. For those students who are from EC electrical and civil, not civil, EC electrical and mechanical, they study material science for their paper 2 also. Material science, paper 2. This material science is totally different. Whatever you are studying here, यहाँ जो बेसिक्स आप मटेरियल साइंस में पढ़ेंगे ये बहुत सरफेस पर होगा, ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा. जबकि जो पेपर 2 में आप मटेरियल साइंस पढ़ते हो वो आपकी टेक्निकल जो कोर ब्रांच है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डेप्थ में होता है. तो जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है पेपर 2 के लिए. मैं पहले ही ये डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ. तो मुझसे बिल्कुल ये पूछने की जरूरत है, खासतौर पर इसी इलेक्ट्रिकल वालों, क्योंकि उनको एक्चुअली पेपर 2 में भी मैं ही पढ़ाता हूँ. तो उन्हें ये लगता है कि सर पढ़ा रहे तो दोनों सेम है. नहीं, दोनों टोटली डिफरेंट. ये अलग बात है कि ये बेसिक्स ऑफ मटेरियल साइंस है, तो कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट सेम होंगे जिनके ऊपर हम नए कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे. तो कुछ पोर्शन ओवरलैप करेगा, लेकिन पूरा का पूरा सिलेबस अगर आप समझें कि जो यहाँ पढ़ लिया है वो पेपर 2 के लिए सफिशिएंट है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. पेपर 2 के लिए आपको सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा, वो आपके सिलेबस में पढ़ाया गया होगा. इसी इलेक्ट्रिकल वालों को मैं ही पढ़ाता हूँ, तो वो सेपरेट आपके टेक्निकल सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा, वो जीएस का पार्ट नहीं है. ठीक, यहाँ जो पढ़ेंगे वो स्पेशली जीएस के लिए पढ़ेंगे, दिस पोर्शन. जो सिलेबस में इस चैप्टर में मैंने आपके लिए जो बना रखा है उनमें 3 टॉपिक का मैं वीडियो देता हूँ, और ये पढ़ा मैं पिछले 2 सालों से कंटिन्यू कर रखा हूँ और इस साल भी दूंगा. उसका कारण ये है कि ये तीनों टॉपिक बहुत ही थ्योरेटिकल इन नेचर है और इनको मैं क्लास में भी कराऊँ तो भी मैं कोई बहुत हेल्प आपकी नहीं कर सकता हूँ. तो वो तीनों टॉपिक के वीडियो कल की क्लास में ही आपको कराऊंगा. आज ही सोचा था कराऊंगा, बट आज थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेडली ठीक नहीं हुआ. जिस तरह से मैं सोच रहा था कि बॉडी विल रिस्पॉन्ड, शायद उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं हुई, तो मैं बैक इन फायर के साथ वीडियो को आपको नहीं पहुंचा पाया. लेकिन कल की क्लास में ऑलमोस्ट 12, तो कल की क्लास में वो वीडियो मिल जाएंगे, उन्हें आप देखते रहिएगा. पॉलीमर का वीडियो होगा, कंपोजिट का वीडियो होगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का वीडियो होगा. ये 3 वीडियो लगभग 2 घंटे के होंगे, तीनों मिला करके 2 या 2.5 घंटे का वीडियो होगा, तो 3 घंटे के बीच का वीडियो होगा. व्हाटएवर इज टाइम ड्यूरेशन आई डोंट रिकॉल एज ऑफ नाउ, वो आपको देखना पड़ेगा. आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे, तमाम सारे चैनल आपको बता दूंगा कि कैसे कहाँ आप मुझसे बातचीत करते हैं. आप मुझे बहुत सारे लोगों से पहले कनेक्टेड भी होंगे, किसी न किसी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे. खासतौर पर ईसी और इलेक्ट्रिकल वाले ऐसा तो कोई नहीं सकता है कि आप एनर्जी में आए हो और मेरी आंखों के सामने से ना मुझे ऐसा संभव नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप मुझसे कुछ पढ़ेंगे तो आप कनेक्ट कर सकते हो. रिमेनिंग टॉपिक मैं क्लास में पढ़ाऊंगा. लगभग 28 से 30 घंटे का सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे, 48 to 30 आवर्स का सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे. टारगेट अगर हेल्थ सही है तो टारगेट ये है कि संडे या मंडे तक कंप्लीट कर लिया जाएगा. लेकिन अगर रिपोर्ट्स कुछ नॉर्मल आई तो मैनेजमेंट टीम आपको कल मैसेज करके इन्फॉर्म कर देगी. यदि नॉर्मल वायरल रहा तो भी मैं आऊँगा, क्लास चलेगी. लेकिन अगर उसके अलावा कुछ रहा तो फिर मैनेजमेंट टीम इन्फॉर्म. अभी आज हम बहुत कहानी ना करके थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है इस सब्जेक्ट का, इसकी डिफिनेशन की बात कर लेते हैं. बहुत लंबा आज नहीं खींचेंगे, कोई नया टॉपिक आज स्टार्ट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है. तो मटेरियल साइंस की डिफिनेशन देख लेते हैं. इसकी डिफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया और आपको जानना चाहिए मटेरियल साइंस बेसिकली है क्या. और अमन कुमार जी कह रहे हैं कि आपको अपना रेजिडेंस एड्रेस चेंज करना चाहिए. अब बेटा मैं घर में था ही नहीं, घर में कभी भी नहीं होता है. मुझे घर बहुत ठीक ठाक इलाके में है, दिल्ली में जहाँ पर भी वहाँ इस तरह के लोग कमाते हैं. तो गॉड्स ग्रेस फैमिली मेंबर्स में भी किसी को नहीं आते हैं. लास्ट ईयर फैमिली में भी किसी को आया तो दे वर आउट ऑफ दिल्ली और आई वाज आल्सो नॉट इन दिल्ली. आई वाज सिंस लास्ट 2 मंथ आई वाज आउटसाइड दिल्ली. इसीलिए बाकी क्लास में दिल्ली आई वाज इन आई केम दिल्ली स्टडी नाइट में, कल रात में आया हूँ दिल्ली और शायद कल शाम को आपको सीधी दिया गया होगा जब मैं दिल्ली आता. सो आई वाज नॉट इन होम और लंबे समय से मैं घर पर नहीं था क्योंकि तमाम सारे बैचेस थे उनको पढ़ाने के लिए. थैंक यू फॉर योर सजेशन. मटेरियल साइंस क्या है? देखिए, वी वांट टू स्टडी मटेरियल्स. हम मटेरियल को पढ़ना चाहते हैं तो हम उनकी प्रॉपर्टीज को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं. क्यों हम मटेरियल की प्रॉपर्टी को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं? इसलिए ताकि किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए कोई मटेरियल सेलेक्ट कर सके. जैसे उदाहरण के तौर पर मुझे एक ब्रिज बनाना है, तो अब ब्रिज बनाने के बहुत तरीके हैं, बहुत सारे मटेरियल हैं जिनकी मदद से ब्रिज बनाया जा सकता है. मिट्टी है, कंक्रीट है, बैम्बू है, वुड है, स्टील है, देयर आर सो मेनी थिंग्स. अब एज एन इंजीनियर हम चाहेंगे कि इन सब अवेलेबल चॉइसेस में से अपने लिए बेस्ट चुनें कि हमारे लिए कौन सी बेस्ट चॉइस है वो चुनना चाहिए.
अब ये बेस्ट चॉइस हम तभी मटेरियल की कर सकते हैं जब हमें आइडिया हो कि हर मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो जो भी मटेरियल हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करता रहेगा उसे हम उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए सेलेक्ट कर लेंगे। सो बेसिकली मटेरियल साइंस इज इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल, क्योंकि किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी उसके स्ट्रक्चर से हेवी इन्फ्लुएंस्ड होती है। स्ट्रक्चर में सिर्फ उसका आउटर स्ट्रक्चर नहीं बल्कि उसके इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट कैसे हैं, उसमें बॉन्डिंग कैसी है, ये सब बहुत सारे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो इस पूरे सब्जेक्ट में हमारा उद्देश्य यही है कि हम मटेरियल के स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टी के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के कारण मटेरियल के कैरेक्टर में क्या फर्क होगा। अगर हमको एक बार ये रिलेशनशिप से उसका कैरेक्टर पता चल जाता है तो फिर हम अपने एप्लीकेशन में उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के मटेरियल को यूज कर लेंगे जिसकी हमें जरूरत होगी। यहाँ एक चीज ध्यान देने लायक है कि जैसे हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं, सो मैकेनिकल और सिविल के लोग, वो मटेरियल साइंस से टोटली डिफरेंट है। सो में हम मटेरियल पर फोकस नहीं होते हैं बल्कि जो उससे इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी पर फोकस होते हैं। जैसे हम एक कॉलम है या एक बीम है, उसका कैरेक्टर देखते हैं कि उस पर कितना बेंडिंग मोमेंट लगेगा, वो कितना बर्दाश्त कर सकता है, शियर फोर्स क्या है, शियर स्ट्रेंथ क्या है, ऑल दोस थिंग्स वी ऑब्जर्व फॉर दैट मटेरियल, दैट स्ट्रक्चर नॉट मटेरियल। बट मटेरियल साइंस में हम फोकस रखेंगे कि बीम जिस मटेरियल से बनी है उस मटेरियल का क्या कैरेक्टर है। So we are not going to focus ourselves for a particular engineering structure. Instead, we are going to focus for ourselves to understand the nature of the material with which that structure has been designed. बल्कि उल्टा कर लें कि हम पहले मटेरियल के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि हम स्ट्रक्चर बना सकें, ताकि उस स्ट्रक्चर में कौन सा मटेरियल बेस्ट फिट हो सके उसको यूज कर सके। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी ये मत सोचिएगा कि सब्जेक्ट में हम बीम के बारे में पढ़ेंगे या हम कॉलम्स के बारे में पढ़ेंगे। नहीं, हम टर्म्स तो वही यूज करेंगे, स्ट्रेंथ, स्ट्रेस एंड ऑल दोज, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर मटेरियल के रिस्पेक्ट में, ना कि किसी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में। तो कुछ बातें लिख लेते हैं यहाँ, कुछ डिफिनेशंस लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सुशील जी कह रहे हैं पुणे थे क्या? जी कामले साहब, आपके ही इलाके में था। आई वाज इन पुणे एंड सिंस लॉन्ग आई वाज देयर, अभी वहीं से आया हूँ। लेट्स राइट फ्यू थिंग्स, डेफिनेशन लिखिए। भूख लग गई। अबे यार करें मटेरियल साइंस, जल्दी जल्दी पढ़ाते नहीं बेंचो। मटेरियल साइंस इन्वॉल्व investigating material science involve investigating the relationship material science involves investigating the relationship that exists between the structure and properties that exist between the structure and properties of materials structure and properties of materials. Material science does not deal with the strength and stiffness behavior of engineering components such as buildings, machines, automobiles, etc. Material science does not deal with the strength and stiffness behavior of components such as buildings, machines, automobiles, etc. Rather, rather, it deals with the relationship
between the structure and properties, relationship between the structure and properties with which relationship between the structure and properties विद with को which भीत बोलता हूँ। these materials are made of, these structures are made of. Rather, it deals with the relationship between the structure and properties of materials with which relationship between the structure and properties of materials with which these components are made of. यानी हम यहाँ बिल्डिंग, मशीन, ऑटोमोबाइल ये सब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये सब जिन मटेरियल से बने होते हैं उन मटेरियल्स को जरूर पढ़ेंगे, उनके बारे में हम बातचीत करना चाहते हैं। अब यहाँ दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वर्ड है स्ट्रक्चर और दूसरा मटेरियल। मटेरियल, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी, इन तीनों पे मैं बात करना चाहता हूँ और इन्हीं तीनों पर बात करके आज की क्लास को एंड भी करूंगा। सो पहला वर्ड मैं बात करना चाहता हूँ मटेरियल। मटेरियल इज बेसिकली मैटर, इट इज द स्टफ विद द हेल्प ऑफ व्हिच समथिंग कैन बी मेड। ये वो चीज है, ये वो पदार्थ है जिसकी मदद से कुछ बनाया जा सकता है। अब कैसे बनाया जा सकता है? हम लोग बना सकते हैं उसी चीज से जिसके पास कुछ मास हो और कुछ वॉल्यूम। यानी मैटर वो चीज है जिसके पास में, या मटेरियल कह लो, वो चीज है जिसके पास में कुछ मास है और कुछ वॉल्यूम। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी तब तक उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा और उससे हम कोई चीज बना नहीं सकते। So material is something with the help of which we can design some component. It is the step by which something can be made, and it will consist of matter basically. So look at this back. Material can be defined. Material can be defined. Material can be defined as something that consists of matter. As something that consists of matter. Material can be defined as something that consists of matter. It is the stuff by which something can be made. It is the stuff by which something can be made. It is the stuff by which something can be made. There are innumerable materials in the world. पूरी दुनिया में बहुत सारे मटेरियल हैं, असंख्य मटेरियल हैं। तो क्या हमको सारा पढ़ना है? नहीं, सारा पढ़ना तो हमारी औकात से बाहर है, लिटरली औकात से बाहर है। We as a human being can't study everything. So we will try to focus ourselves only to those materials which are mainly used in our engineering applications. यानी इंजीनियरिंग की कोई चीज बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होंगे, हम प्रमुखतः उन्हीं मटेरियल पर खुद को फोकस रखेंगे, मेनली उन्हीं मटेरियल्स पर खुद को फोकस रखेंगे, बाकी सभी मटेरियल पर हमारा फोकस नहीं होगा। तो ऐसे मटेरियल जो इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स को बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें इंजीनियरिंग मटेरियल कहते हैं। और इंजीनियरिंग मटेरियल मेनली तीन ब्रॉड कैटेगरीज में बनाए जाते हैं, कैटेगराइज किए जाते हैं। पहली कैटेगरी मेटल्स या एलॉयज, जब दो मेटल को मिला देते हैं तो जो नया मटेरियल बनता है उसे एलॉय कहते हैं। तो मेटल्स एंड एलॉयज, ये पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी होती है सेरेमिक्स एंड ग्लासेस। सेरेमिक्स जैसे आपने देखा होगा बहुत यूज करते हैं हम, ब्रिक्स, स्टोन्स, टाइल्स, क्ले बेस्ड प्रोडक्ट्स, बेसिकली स्टोन या क्ले बेस्ड प्रोडक्ट्स जो है वो सेरेमिक्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये भी बहुत यूज होते हैं। एंड थर्ड जो आता है हमारे पास वो आता है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों होते हैं, बट इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में मेनली हम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स का उपयोग करते हैं। सो वी कैन राइट ऑर्गेनिक पॉलीमर्स आल्सो। These are the three broad classifications. So we can write like this: the engineering materials can be classified as engineering materials can be classified as first metals and alloys. Second, ceramics and glasses. And third, organic polymers. या सिर्फ पॉलीमर भी लिख सकते हैं। लेकिन बेटा मॉडर्न डे इंजीनियरिंग की जरूरतें इन तीनों से पूरी नहीं हो पाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमें कोई एक ऐसा एप्लीकेशन का मटेरियल बनाना है जो लाइट इन वेट हो, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ का हो। जैसे एयरक्राफ्ट का कोई कंपोनेंट बनाना है तो हम क्या चाहेंगे? लाइट वेट हो बट बहुत अच्छी स्ट्रेंथ। अब लाइट वेट पॉलीमर्स का होता है लेकिन उनकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती। स्ट्रेंथ मेटल और सेरेमिक की अच्छी होती है लेकिन उनका वेट बहुत ज्यादा होता है। तो अब ये तीनों में से कोई एक इंडिविजुअल हमारी इस एप्लीकेशन को पूरा नहीं कर पाता है। तो हम दो या दो से ज्यादा मटेरियल्स को मिला करके एक नया मटेरियल बनाते हैं जिसे हम कंपोजिट कहते हैं।
सो इसके बारे में बात की जाएगी। सो कंपोजिट्स आर बेसिकली द मटेरियल्स व्हिच आर मेड फ्रॉम द टू मटेरियल्स, दो या दो से ज्यादा मटेरियल को मिला करके जो नया मटेरियल बनता है उसे कंपोजिट। तो ये हम अपनी मॉडर्न डे इंजीनियरिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस तरह के मटेरियल को बनाते हैं, ठीक। सो इस तरह से अगर देखा जाए तो ब्रॉडली हम चार बड़े ग्रुप में कैटेगराइज कर रहे हैं, मेटल, एलॉय, सिरेमिक, ग्लास एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स एंड कंपोजिट। दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। लिख लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। दिव्येंदु माझी, दिव्येंदु क्या आपने क्लास लेट ज्वाइन किया? क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है वो पहले ही रिप्लाई किया जा चुका है। दिस मटेरियल साइंस सेम एज पेपर टू, कैसे सेम हो सकती है? हाउ कैन इट बी सेम? डू यू फील यूपीएससी पर्सन्स आर इडियट्स कि एक ही चीज दो जगह पूछेंगे? दे कांट, इट मींस बोथ आर टोटली डिफरेंट, ठीक है। आप शायद लेट क्लास ज्वाइन किए, मैंने एकदम शुरू में ही इस चीज को क्लियरली मेंशन कर दिया है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की मटेरियल साइंस टोटली डिफरेंट है। फॉर पेपर 2 यू हैव टू स्टडी सेपरेटली। नेक्स्ट, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी उसके स्ट्रक्चर से बहुत इन्फ्लुएंस होती है। स्ट्रक्चर मतलब उसके अंदर एटम्स का अरेंजमेंट कैसे है, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसे है, उसकी बॉन्डिंग कैसी है, उसका माइक्रो स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब उसके कैरेक्टर को हेवीली इन्फ्लुएंस करते हैं। सो बेसिकली इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल वी मस्ट अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल। सो नेक्स्ट हेडिंग जो हम समझना चाहते हैं वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आइए देखते हैं व्हाट इज स्ट्रक्चर। The structure of material, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखिए। The structure of material, the structure of material usually relates, usually relates the structure of material usually relates to the arrangement of internal components, to the arrangement of internal components such as atoms, internal components such as atoms, molecules, grains, etc. Atoms, molecules, grains, etc. Usually structures are classified as how? First one, macro structure. Macro means large, so it can be observed with naked eye. ऐसा स्ट्रक्चर जो आप naked eye से देख सकते हैं बिना किसी इक्विपमेंट की मदद से। सो ऑब्वियसली ये आउटर सरफेस जो है उसकी बात कर रहे हैं। आउटर सरफेस भी बहुत सारी जानकारी मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में देता है। जैसे कोई क्रैक है तो आपको समझ में आ जाएगा कि मटेरियल कमजोर है, अब इसको किसी ऐसे एप्लीकेशन में यूज किया जहां लोड ज्यादा पड़ा तो ये टूट सकता है। तो वी कैन हैव प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैक्रो स्ट्रक्चर एज वेल। सो खैर वो बातें बाद में करेंगे। अभी हम ये कह सकते हैं कि इट इज द स्ट्रक्चर व्हिच कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय नेक्ड आई। सो एग्जामिन विद नेक्ड आई, एक लाइन बस, एग्जामिन विद नेक्ड आई। अगर हम क्रिस्टल की बात करें, ज्यादातर मटेरियल हम क्रिस्टलाइन पढ़ेंगे। सो क्रिस्टल्स में अगर एटॉमिक लेवल पर कोई सिमेट्री है तो वो सिमेट्री माइक्रो स्ट्रक्चर और मैक्रो स्ट्रक्चर में भी रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि एटम्स के अरेंजमेंट की वजह से ही ग्रेन्स बनेंगे और ग्रेन्स के अरेंजमेंट की वजह से माइक्रो स्ट्रक्चर और उस माइक्रो स्ट्रक्चर की वजह से मैक्रो स्ट्रक्चर। सो एनी काइंड ऑफ सिमेट्री पोजेस्ड ड्यूरिंग द एटॉमिक पैकिंग इन द मटेरियल दैट विल रिफ्लेक्ट इन द आउटर स्ट्रक्चर आल्सो, इन द मैक्रो स्ट्रक्चर आल्सो। जैसे उदाहरण के तौर पर आप में से अगर किसी ने डायमंड पहना होगा तो आप देखिए डायमंड हमेशा फ्लैट रहता है। डायमंड कभी आप स्फेरिकल शेप में नहीं बना पाएंगे। उसका रीजन है कि डायमंड में सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। अभी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल क्रिस्टल क्या है, पॉलीक्रिस्टल क्या है। सिंगल क्रिस्टल मटेरियल्स में ऑल एटम्स सिंगल ओरिएंटेशन में होते हैं, और अगर ऑल एटम्स सिंगल ओरिएंटेशन में है तो फिर हमेशा फ्लैट सरफेस दिखाई देगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको स्मूथ सरफेस दिखाई दे या आपको स्फेरिकल टाइप सरफेस दिखाई दे। तो मैक्रो स्ट्रक्चर में कई बार मैक्रो स्ट्रक्चर देख करके हम इंटरनल सिमेट्री के बारे में भी कमेंट कर सकते हैं, नॉट प्रिसाइजली बट फिर भी काफी हद तक हम कमेंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। मैं थोड़ा सा बहुत आज लिखना नहीं चाह रहा हूँ, आगे से आप चिंता मत करिएगा। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आई विल बी राइटिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स। थोड़ा आज बॉडी उतना रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, सो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लिखिए। द इंटरनल सिमेट्री ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल, द इंटरनल सिमेट्री ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल may reflect in the external form of a crystal, may reflect in the external form of a crystal. The internal symmetry of crystalline material may reflect in the external form of
crystal, such as flat faces of diamond, etc. Such as flat faces of diamond, etc. Then the next structure is microstructure. Microstructure. So this structure cannot be observed by the naked eye. It is observed with the help of an optical microscope. It is observed with the help of an optical microscope. It is observed with the help of an optical microscope. So it will provide you more detailed information about the atomic arrangement, etc. Then third one is crystal structure. Crystal structure. It tells us about the atomic arrangement in the crystal. It tells us about the atomic arrangement in the crystal. It tells us about the atomic arrangement in the crystal. Actually आगे चलकर भी आपको पढ़ाऊंगा कि क्रिस्टल्स की खूबसूरत बात यह होती है कि उनमें एटॉमिक अरेंजमेंट पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक का मतलब है कि जैसे ना कभी दीवार देखो आप, एक वॉल तो ब्रिक से मिलकर के बनी होती है, तो एक ब्रिक पकड़ करके और उसको पूरा रिपीट कर दो तो आपकी दीवार बन जाएगी। ठीक उसी तरह से यहाँ एक स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एटम्स मिलकर के एक यूनिट सेल बनाते हैं और वो यूनिट सेल को आप ब्रिक की तरह कंसीडर कर सकते हो। तो अगर यूनिट सेल को हर डायरेक्शन में रिपीट कर देते हैं तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बनती है, जिसे क्रिस्टल है। So crystal is nothing but the periodic arrangement of atoms, and basically atoms का जो smallest set होता है उसे unit cell कहते हैं और unit cell को अगर हर डायरेक्शन में periodically repeat कर दिया जाए तो crystal बनकर तैयार होता है। So that information we can observe in the crystal structure. So लिखिए जरा एक पॉइंट यहाँ ये भी लिखेंगे। The smallest group of atoms, the smallest group of atoms by repeating which periodically in all the directions comma लगाएं, the crystal structure can be developed. The crystal structure can be developed. फिर से कॉमा लगाएं। This smallest group of atoms is known as unit cell. This smallest group of atoms is known as unit cell. This smallest group of atoms is known as unit cell. Then we come to atomic structure. एकदम माइन्यूट लेवल पर आ जाते हैं. That also affects the properties of the material. And in atomic structure we have further 2 structures, and those are electronic structure and nuclear structure. Electronic structure tells us about the arrangement of electrons in the various orbits of atom. It tells us about the arrangement of electrons. It tells us about the arrangement of electrons in various orbits of the atom. Nuclear structure, it tells us about the number of protons and neutrons inside the nucleus of an atom. न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए एक मेथड बड़ी पॉपुलर है जो यूज होती है. यू शुड बी नोइंग अबाउट द नेम ऑफ दैट मेथड. सो इट इज स्टडीड बाय न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स. इट इज स्टडीड बाय न्यूक्लियर spectroscopic techniques. It is studied by nuclear spectroscopic techniques such as nuclear magnetic resonance (NMR) and mass bar studies, such as nuclear magnetic
resonance, and mass war studies etc. ये फील्ड अभी एवर ग्रोइंग है। आप देखें तो लगभग पिछले 200 साल से इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं और अभी भी इलेक्ट्रॉन, इस साल का भी नोबेल प्राइज उठा करके आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही मिला हुआ है, इलेक्ट्रॉन की किसी प्रॉपर्टी के लिए ही इस साल का भी फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। सो दिस इज द फील्ड वेयर स्टिल द थिंग्स आर गोइंग ऑन। Write down this. Done? जब हो जाया करे तो मुझे लिख भी दिया करें ताकि मुझे भी पता चले कि आप लिख चुके हैं। तो चला मैं आगे बढ़ गया फिर आप चिल्लाएंगे हुआ। थर्ड टर्म हमने यूज किया था प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मींस मटेरियल ट्रेट, कैरेक्टर। जैसे तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या है, तुम्हें किसी ने एक थप्पड़ मारा तो तुम उसके लिए कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। तो थप्पड़ मारा मतलब एक एक्सटर्नल एक्साइटेशन दिया और उस एक्सटर्नल एक्साइटेशन के लिए तुम्हारा जो रिस्पॉन्स है वही तुम्हारा कैरेक्टर बताएगा। तुमने लौट करके वापस लगा दिया उसको, तो तुम ऐसे व्यक्ति हो जो किसी की दी हुई चीज अपने पास नहीं रखते हो। तुमने कुछ नहीं कहा, तो ये दो केस हो सकते हैं, या तो तुम बहुत सेंसिटिव हो या बहुत डरपोक हो। ठीक है, तुम्हें थप्पड़ पड़ा, बेहोश हो गए, बहुत कमजोर हो। तो योर रिस्पॉन्स एंड इनफैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स and the type of response for the external input tells us about your behavior. सेम उसी तरह से किसी मटेरियल के ऊपर जब कोई एक्सटर्नल रिस्पॉन्स एक्सटर्नल एक्साइटेशन लगाएंगे तो इस एक्सटर्नल एक्साइटेशन के लिए रिस्पॉन्स होगा, वही इसका बिहेवियर या प्रॉपर्टी कहलाएगा। सो लिखेंगे प्रॉपर्टी इज अ मटेरियल एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी इज अ मटेरियल ट्रेट, ट्रेट मतलब एट्रीब्यूट या कैरेक्टर, ट्रेट इन टर्म्स ऑफ द काइंड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स, इन टर्म्स of the kind and magnitude of response, kind and magnitude of response, magnitude of response, in terms of the kind and magnitude of the response. A property is a material trait in terms of the kind and magnitude of response. There can be several properties, several types of properties. Response for an external stimulus लिखिए, हो सकते हैं या तो तुम बहुत सेंसिटिव हो या बहुत डर। देन थर्ड टर्म हमने यूज किया था प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मींस मटेरियल ट्रेट, करेक्ट। हम और एंड मास वार स्टडीज एक्सेट्रा। ये फील्ड अभी एवर ग्रोइंग है। आप देखें तो लगभग पिछले 200 साल से इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं और अभी भी इलेक्ट्रॉन, इस साल का भी नोबेल प्राइज उठा करके आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तुम्हें थप्पड़ पड़ा, बेहोश हो गए, बहुत कमजोर हो। तो योर रिस्पॉन्स एंड इनफैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स एंड द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स फॉर द एक्सटर्नल इनपुट टेल्स अस अबाउट योर बिहेवियर। सेम उसी तरह से किसी मटेरियल के ऊपर जब कोई एक्सटर्नल रिस्पॉन्स एक्सटर्नल एक्साइटेशन लगाएंगे तो इस एक्सटर्नल एक्साइटेशन के लिए उसका जो रिस्पॉन्स होगा वही उसका बिहेवियर या प्रॉपर्टी कहलाएगा। तो लिखिए प्रॉपर्टी इज अ मटेरियल एट्रीब्यूट, अ प्रॉपर्टी इज अ मटेरियल ट्रेट, trait मतलब attribute या character, trait in terms of the kind and magnitude of response, in terms of the kind and magnitude of response, kind and magnitude of response, magnitude of response, in terms of the kind and magnitude of the response. A property is a material trait in terms of the kind and magnitude of response. There can be several properties, several types of properties. Response for an external stimulus लिख लीजिए या excitation लिख लीजिए। Response to a specific imposed stimulus, excitation या इनपुट, जो भी कहना चाहते हैं। तो किस तरह का इनपुट होगा वही डिसाइड करेगा कि आप किस तरह की प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं। जैसे मैकेनिकल फोर्स लगाओगे तो जो रिस्पांस होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाओगे तो जो रिस्पांस होगा वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। लेट्स सपोज आप वोल्टेज लगा दो, वोल्टेज इज व्हाट, ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट कर सकता है भाई दौड़ जा। तो अगर भाई दौड़ गया तो मटेरियल कंडक्टर है, नहीं दौड़ा तो इंसुलेटर है। इस चिंता में है कि दौड़ूं ना दौड़ूं, मतलब दौड़ भी रहा है बट बहुत सारा ऑब्स्टेकल पा रहा है तो सेमी कंडक्टर होगा। सो किस तरह से किसी एक्सटर्नल रिस्पांस के लिए, एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए, इनपुट के लिए मटेरियल का रिस्पांस है वही उसकी प्रॉपर्टी कहलाएगा। So properties can be of several types, but majorly we can classify as properties of solid materials can be properties. मैंने मैसेज ही नहीं देखा। Solid material can be first. It can be
mechanical property. This is for the mechanical force. Then it can be electrical property. It is for the electrical force. Electrical property. Then it can be magnetic property. It is for the magnetic force. Then it can be thermal property. Yeah, if you are increasing temperature, etc. So thermal property. Then it can be optical properties and light on the material. Then the behavior of the material, optical property. And then deteriorative properties. Deteriorative properties जैसे corrosion, etc. जो material के performance को over the period of time affect कर रहे हैं, those are known as deteriorative properties. We will be discussing all these properties. In fact, that is the matter of discussion in this chapter. इस पूरे chapter में यही सब हमको पढ़ना है, ठीक? तो जैसा मैंने शुरू में बताया था कि आज मैं नया टॉपिक को स्टार्ट नहीं करूँगा. दिस वाज इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल साइंस. हम करेंगे आज की क्लास को. कल से क्लास स्टार्ट करेंगे. कंडीशन ये है कि मेरी रिपोर्ट अगर नॉर्मल हुई तभी. यदि मुझे डेंगू या कुछ ऐसा कि डॉक्टर ने रेस्ट वगैरह के लिए कहा तो आपको मेरी टीम मैसेज कर देगी. जब मैं ठीक होऊंगा तब क्लास स्टार्ट होगी. रिपोर्ट कल सुबह 10 बजे के बाद आएगी, यानी 12-1 बजे तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी. तो इवनिंग आपको मैसेज आ जाएगा. यदि कोई मैसेज नहीं आता है तो 5:30 पर क्लास होगी, मैं आ जाऊँगा. 5:30 से 5:40 के बीच में आई विल बी देयर टू टेक द क्लास. ठीक. 2-3 properties of solid material can be properties of solid material can be mechanical, electrical, magnetic. Thermal, optical, and तो आपको मिलेंगे जो देख पाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत वास्ट है एंड आई हैव बीन अलॉटेड ओनली 30 आवर्स टू कंप्लीट द सब्जेक्ट. सो deteriorative कहीं ना कहीं कुछ वीडियोस का सहारा लेना पड़ेगा. तो जो बहुत थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उनके मैंने वीडियो पहले से रिकॉर्ड कर रखे हैं और ये परंपरा पहले से चला रखा हूँ. इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस. सो वो वीडियोस आपको मैं कल या परसों प्रोवाइड करा दूंगा. कीप ऑन वाचिंग देम. 10-15 मिनट 20 मिनट करते हुए देखते रहिए एंड देन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. बाकी की बातें कट करेंगे. आज के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ. आज की क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाएगी. सो आई एम रियली वेरी सॉरी एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन दैट इज बियॉन्ड माय कंट्रोल. सो विल बी मीटिंग. थैंक यू. गुड नाइट. सो टेक केयर. हेलो. अबे एक लेक्चर तो खत्म भी हो गया बहुत जल्दी. मॉस बार इलेक्ट्रॉन की स्टडी नहीं करता बेटा. किसी ने लिखा मॉस बार की स्टडी में हम न्यूक्लियस के बारे में ज्यादा फोकस होते हैं. इलेक्ट्रॉन के लिए सेवरल अदर मेथड्स हैं जो हम लोग ड्यूरिंग द कोर्स डिस्कस करेंगे. बट मॉस बार स्टडीज मेनली फोकस ऑन द स्टडी अबाउट द न्यूक्लियस. राइट. यस बावनकर आंसर फॉर योर क्वेश्चन. ठीक है. व्हाट इज मॉस बार स्टडी? इट इज अ मेथड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द न्यूक्लियस, या कह लें कि हाउ द न्यूक्लियस ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल रिस्पॉन्ड. उसके लिए जो मेथड है उसे मॉस बार स्टडी कहते हैं. यस बावनकर आपका आंसर. बहुत बहुत आभार आप सभी की शुभेच्छाओं के लिए, आप सभी इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए. थैंक यू प्रियदर्शी, ऋतिक, अजय, एवरीवन. किसी का नाम अगर छूट भी गया है तो थैंक यू. Good evening, namaskar. So let's begin with the first chapter of this subject. In the last class we have done only in introduction to what material science is, and आज उसके आगे चलना है हम लोगों को. तो पहला टॉपिक जो यहाँ पर पढ़ना होता है that is atomic structure and chemical bonding. एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग नाम का ये चैप्टर हमें आज पढ़ना है. ये किसी कहानी शुरू करनी है.
देखो हम सभी जानते हैं कि मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स एंड दीस टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज एटम्स. इसको बाद में देखते हैं अपन. यार 63 आवर्स करे तो मैथ 8 घंटे दिन का अपन देख भी नहीं सकते. अरे भाई खाना दे दे मम्मी. What is your age? अरे एक लड़का पूछ रहा है कितने साल का है. I am 22 years old. अगले साल 23. भाई एज बताया तो घर में डांट पड़ गई. पढ़ाई कर बोलते बड़ा हो रहा. चलो यार लंच नहीं डिनर ब्रेक. अब स्ट्रीम चालू रखो कि बंद करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा. कितने घंटे से चालू होता है? 1.5 घंटे की पढ़ाई हुई आज. अच्छा देवेन व्हाट आर यू स्टडिंग? अरे मैंने मैसेज देखा नहीं यार पहले का. मैं मटेरियल साइंस कर रहा हूँ. यूपीएससी का जनरल स्टडीज़ का पार्ट कर रहा हूँ. बस आज ही टेक्निकल पार्ट कंप्लीट किया मैंने. 50 घंटे का था वो पूरा लेक्चर. वो कंप्लीट हो गया. अभी 30 घंटे वाला जनरल स्टडीज़ का पार्ट करने में.
चले भी गया हो तो अगले ने रिप्लाई भी नहीं दिया। क्या भाई रिप्लाई देना कुछ तो। जान दे, वैसे भी मैं स्ट्रीम बंद ही कर रहा।